We start with a big story, and 2 people were killed and 3 others injured in police firing as protests over recommendation of granting permanent residence certificates to 6 communities escalated in Arunachal Pradesh. Police opened fire when protesters tried to attack the private residence of Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu. Security personnel urged the protesters to return, but without paying any heed to the request, the protesters marched towards the residence and started pelting stones. To control the situation, police had to resort to firing, in which 2 men aged between 20 and 24 years were killed. 3 others were injured in the firing. The body of another person who was killed in alleged police firing on Friday night was kept by the protesters at the Indira Gandhi Park and said that it will not be buried or cremated until the demands were met. So far, 2 people have lost their lives and 4 others as massive protests broke out over the PRC issue in the state. Earlier, the protesters had also torched the Deputy Chief Minister's house. Let's quickly listen in to Andhra Pradesh, through Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu. मैं अपना जनता खास करके ईटानगर नाहरलगुन में जो बसे हुए हैं आप सभी से वही अनुरोध करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही शांतिपूर्ण एक राज्य है। हम लोगों को अनेकता में एकता हम लोग को हमेशा बरकरार रखना है। पीआरसी मैटर को मैंने जैसे कहा कि मैं और भी हम उसको मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इसमें वाइडर कंसल्टेशन हम लोग फिर दोबारा करेंगे। तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें भाग नहीं लेने के लिए। अभी यहाँ पे फोर्सेस, कल थोड़ा फोर्सेस भी कम था, अभी आज आर्मी ने भी टेक ओवर कर लिया है। तो मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर पे ही बैठे और घर से बाहर रात को आप लोग नहीं निकलने के लिए। Joining us on the phone line is my colleague Anirudh. Anirudh, what's the latest ground situation in Arunachal? Yes, since the last 20 days, ultimate lawlessness has been witnessed in Arunachal Pradesh, and as far as the situation right now is concerned, some of the protesters are still blocking the roads leading to Itanagar, and they are also targeting vehicles that are trying to make their way. In fact, last night when the LEDs were demonstrating in Itanagar, police had to fire again at night, but casualty that firing. We are also picking up that protesters last night also tried to loot 2 arms and ammunition store in Naharlagun and Itanagar. And today, 6 companies of ITBP and 6 columns of army have been called in. The 6 companies of ITBP will be joining other troops today to maintain the law and order situation. On the other hand, today the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, has also convened an all-party meeting, and in that all-party meeting, it is very likely that the Chief Minister might take some very crucial decision in regards to the political affairs of the state. Absolutely. Absolutely. Anirudh, thank you so much for joining us this morning. Situation is tense despite Army also conducting flag march in Itanagar and Naharlagun. Let's once again listen in to the Arunachal Chief Minister. मैं अपना जनता खास करके ईटानगर नाहरलगुन में जो बसे हुए हैं आप सभी से वही अनुरोध करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही शांतिपूर्ण एक राज्य है। हम लोगों को अनेकता में एकता हम लोग को हमेशा बरकरार रखना है। पीआरसी मैटर को मैंने जैसे कहा कि मैं और भी हम उसको मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इसमें वाइडर कंसल्टेशन हम लोग फिर दोबारा करेंगे। तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें भाग नहीं लेने के लिए। अभी यहाँ पे फोर्सेस, कल थोड़ा फोर्सेस भी कम था, अभी आज आर्मी ने भी टेक ओवर कर लिया है। तो मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर पे ही बैठे और घर से बाहर रात को आप लोग नहीं निकलने के लिए।